Hello. इस वीडियो में we'll be discussing lesch syndrome, its causes, signs and symptoms, diagnosis, treatment और prevention. सबसे पहले लेsch syndrome होता क्या है? लेsch syndrome एक रेयर डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल X-linked रिसेसिव पैटर्न को फॉलो करता है. इट रन्स इन फैमिलीज एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन मेल्स. X-linked रिसेसिव मेल्स जो हैं वो मैनिफेस्ट करते हैं सिम्टम्स एंड फीमेल्स कैरियर्स रहते हैं. The disorder is characterized by characteristic features इसके आप देखेंगे तो increased production of uric acid which is normally found in bladder, hyperuricemia रहता है, and कुछ specific neurological और behavioral abnormalities रहती हैं. जो abnormally increased uric acid levels हैं they can further lead to further medical problems. तो ये जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं लेsch syndrome के जो behavioral disturbances हैं which are often seen later in life, they are mainly characterized by self-injurious behavior होता है. लेsch syndrome अगर नाम अपन सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है self-injurious behavior person में रहता है, पेशेंट में, like biting और head banging, खुद को इंजर करने का इसमें इस डिजीज में बिहेवियर रहता है. जैसे ये भी आप सेल्फ बाइटिंग फिगर में देख रहे हैं. तो जो मेन एरियाज अफेक्टेड हैं लेsch सिंड्रोम में वो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग अफेक्टेड है, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड एक्सेस यूरिक एसिड या हाइपरयूरिसीमिया इसमें रहता है. ये तीन चीजें. तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, बिहेवियरल और कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज रहती हैं एंड एक्सेस यूरिक एसिड प्रोडक्शन. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. Now coming to the causes of lesch syndrome. So lesch syndrome is caused by a defect in gene that controls the production of an enzyme which is called hypoxanthine guanine phosphorylated transferase HGPRT, जो कि एक salvage enzyme है. hypoxanthine base को ये salvage करता है and produce करता है inosine which is responsible for proper metabolism of purines. ये अगर HGPRT जो एंजाइम है वो रहता है तो प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली रेगुलेट होता है. प्यूरिन्स आर इन्वॉल्व्ड इन अ पर्सन्स जेनेटिक मेकअप. दे आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग अप ऑफ अ पर्सन्स डीएनए. प्यूरिन्स और प्यूरिन्स का प्रॉपर रिसाइकलिंग जरूरी है टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ जीन्स. अगर इस एंजाइम की HGPRT हाइपोक्सांथिन ग्वानिन फॉस्फोराइलेटेड ट्रांसफरेज एंजाइम का जो है एब्सेंस हो जाता है या डेफिशिएंसी हो जाती है तो इट अफेक्ट्स द वे प्यूरिन्स आर रिसाइकल्ड एंड उनकी फंक्शनिंग डेफिनेटली. तो इससे चूंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं डीएनए के तो दिस रिजल्ट्स इन बिल्डिंग अप ऑफ एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड, क्योंकि प्यूरिन का एंड प्रोडक्ट है डिग्रेडेशन का यूरिक एसिड है. तो वो एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड बढ़ जाता है व्हिच कैन लीड टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. Lesch syndrome is caused by a genetic defect on X chromosome, hence it is an X-linked genetic disorder. It is transferred from mother to son, and as son bears only one X chromosome which is defective, he suffers from the condition. Now, signs and symptoms lesch syndrome के क्या होते हैं? तो जो मेन एरियाज अफेक्टेड है लेsch सिंड्रोम में वो हमने बताया कि न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग, बिहेवियर और कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड एक्सेस यूरिक एसिड प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड increases its level in blood, the condition called hyperuricemia. Now, if this remains unnoticed and untreated, excess uric acid can lead to crystal formation. Uric acid crystals or stone formation in kidneys, ureters or bladder. इससे क्या होता है कि increased risk of urinary infection और at times hematuria, blood urine में आना, hematuria कहते हैं उस condition को. And crystals and hematuria appear like orange sand on baby nappies. Orange sand एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है. जो क्रिस्टल्स और हेमेट्यूरिया हैं वो ऐसा बेबी नापीज में आपको देखने को मिलेगा लाइक ऑरेंज सैंड जैसे.
Crystals may also get deposited in some joints which can cause swelling. ये crystals हैं joints में भी जमा हो सकते हैं और swelling, tenderness and gouty like arthritis भी cause कर सकते हैं. Neurological impairment mainly presents as low muscle tone. The muscle tone come and delayed developmental milestones like sitting, crawling, walking, etc. during the first year. In older babies, spasms of facial muscles and limbs may be seen. Spasms देखे जाते हैं older babies में muscles, facial muscles and limbs. Sometimes difficulty in swallowing and even lack of speech may be noted. तो गुटकने में दिक्कत, swallowing में दिक्कत कभी-कभी and lack of speech भी present रह सकता है इस disease में. Some other features में देखेंगे irritability बहुत रहती है, loss of motor control loss, abnormal jerking movements of limbs, arching of spine, overactive or increased reflexes, and spasticity. Affected persons may have difficulty in walking and they may require assistance in these activities, may even have to use a wheelchair. The self-destruction may increase with time and become severe and more like a compulsion. Other behavior issues include being aggressive, being non-cooperative, and responding coldly or with anger. Now, how do we diagnose lesch syndrome? So, lesch syndrome syndrome diagnosis can be made by a detailed case history and thorough examination of the patient. Blood and urine tests किए जाते हैं to detect increased uric acid levels. Blood tests may also reveal microcytic anemia in these patients. Clinical examination हम करेंगे किस लिए? ताकि हम न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग को असेस कर सकें, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को और कॉग्निटिव एबिलिटीज उनको परफॉर्म करने को बोली जाती है, so that we can assess if there is any problem. Along with the typical clinical features, the physician may be able to elicit increased reflexes. In patients में reflexes बढ़े हुए मिलेंगे, spasticity मिलेगी. Physical examination किया जाता है to assess growth, and this may reveal delayed growth, delayed development, learning difficulties, delayed or absent puberty, and testicular atrophy. तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कहे जाते हैं लेश सिंड्रोम के. नंबर 1, यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन. नंबर 2, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट. नंबर 3, behavioral problems. These are typical to make a diagnosis of lesch syndrome. कौन सी दी? तो अगर पेशेंट में यूरिक एसिड ओवर प्रोडक्शन है या तो यूरिसीमिया है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट भी है, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में पता चला, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिली. तो these three are typical to make a diagnosis of lesch syndrome. The exact diagnosis, how can we obtain? This can be obtained by performing tests to study the enzyme activity, HGPRT, which is involved, and genetic testing to find the defect. Now, treatment of lesch syndrome. Lesch syndrome being a genetic disorder, it doesn't have treatment to cure the disorder. However, certain medications use की जा सकती हैं जिससे कि symptoms को reduce किया जा सकता है. कोई एग्जैक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर है तो इसका कोई क्योर तो है नहीं अभी तक. सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल सकता है, जैसे एलोप्यूरिनॉल यूज किया जा सकता है टू मैनेज इंक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल्स या गाउटी आर्थराइटिस, जो कि xanthine ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है, यूरिक एसिड प्रोडक्शन को कम करता है. सेकेंडली, ड्रग्स लाइक डायजेपाम, हेलोपेरिडोल, गाबापेंटीन ये यूज किए जाते हैं बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के लिए, स्पैस्टिक इश्यूज के लिए और रिलेटेड इश्यूज के लिए. ड्रग्स डायजेपाम, हेलोपेरिडोल. Third, appropriate intervention is done
treat the urinary stones. Urinary stones को treat करने के लिए appropriately measures ले सकते हैं. Surgical approach may be considered for muscular and joint related complaints. A normal and healthy diet and activity is generally advised to these patients. A normal and healthy diet ले और activity जरूरी है. It is important to ensure proper hydration. Hydration क्यों? Because they have increased risk of uric acid stone formation. So they are advised to take proper hydration and increased intake of fluids to reduce the risk of urinary stones. Physical restraints जो हैं required रहते हैं in patients में, ताकि major injuries से बचा जा सके, to prevent major injuries from head banging and biting. Then behavior modification techniques भी कई सारी होती हैं और rehabilitation techniques therapies होती हैं. ये helpful हो सकती हैं behavioral और cognitive difficulties को manage करने के लिए. Behavior modification techniques. How to prevent lesch syndrome? तो persons जिनमें कि family history of lesch syndrome होता है, they should have genetic counseling before planning for a child. They should definitely have genetic counseling. And women related to lesch syndrome patients, like mothers, sisters, they should be screened to detect if they are carriers. Prenatal screening can be done for pregnant women who are carrying lesch syndrome or those who have a history of delivering a child with lesch syndrome.